Welcome students, class 9. Now in commercial studies we will start the new chapter, that is classification of commercial organization, fourth chapter. Okay, so in this chapter you will understand what is commercial organization and its types, right? So let's start this chapter. Let's understand, in the previous chapter I explained you that what is organization. Organization is basically group of people, okay, those who are working for some goal, okay, some common objective. That is your organization, right? Now here, commercial organization, it is any business that sells goods or services for the purpose of making profit or money. Basically, organization, it is a business, it is a commercial activities, it is a business which work for some purpose or which work for some common goal, okay, to earn profit. Basically their motive is to earn profit, right? It can be that organization can sell goods or it can sell services, but their ultimate goal is to earn profit. They want to earn profit, right? So this is commercial organization. It is a group of people who is working for some common objective to earn profit, right? Now some features that it is a group of people. It is clear now that organization, it is a group of people. कई लोगों का group होता है, right? Second thing, it works for common goal. ये क्या काम करते हैं? They work for a common goal. एक common goal के लिए they work, right? So this is commercial organization. Okay, I hope the meaning of commercial organization is clear, that it is any business that sells goods or services for the purpose of making profit or for the purpose of making money, right? Now this commercial organization is categorized into three parts, okay, that is your private, public and joint. ये organizations तीन में divided किए गए, that is your public, private and joint. Okay, let's understand that what is private organization, private commercial organization. देखो यहाँ पे क्या है ना, commercial include कर दिया, commercial, तो वो नाम से ही पता चल जाएगा that this organization will work for some profit. Commercial, right? Private, this organization is owned and controlled by private businessmen also. Basically this organization, private business organization or private commercial organization, they work for they are owned and controlled by private businessmen, जो कंट्रोल किए जाते हैं, ओन किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं कुछ बिजनेसमैन के द्वारा. दैट इज प्राइवेट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ये या तो कुछ ग्रुप में हो सकता है या सोल भी हो. सोल मीन्स सिंगल, वन पर्सन, राइट? कोई एक पर्सन अगर किसी बिजनेस को रन कर रहा है, दैट कम्स अंडर योर सोल. ओके, सो दिस इज सोल बिजनेस. सो इट इज this private organization is owned and controlled by private businessmen or sole or single person. Clear? So this is private commercial organization. Let's see the features of commercial organization. The first one is private ownership and control. This organization, their ownership in a प्राइवेट हैंड, इनकी जो ओनरशिप होती है या मैनेजमेंट होता है एक प्राइवेट पर्सन के हाथ में होता है, राइट? और सारा कंट्रोल भी प्राइवेट पर्सन के पास होता है. जैसे एग्जाम्पल योर रिलायंस इंडस्ट्री. रिलायंस इंडस्ट्री क्या है? प्राइवेट है, राइट? तो उसकी जो ओनरशिप है, इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड विद बाय धीरूभाई अंबानी एंड नाउ नेक्स्ट इट इज कंटिन्यूड बाय मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी. सो दिस Mukesh Ambani, he is owning, the ownership is in his hand. Okay, Mukesh Ambani and Anil Ambani. Clear? So this is private ownership and control. Next is profit motive. I explained you that the objective of commercial organization is to earn profit.
इनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, MEN हाँ, प्रॉफिट अर्न करना इनका, देयर मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट किसी भी कीमत पर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज नो स्टेट पार्टिसिपेशन. दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ your private commercial organization, that no state participation means government का कोई interference नहीं होगा. No interference of the government. Government will not interfere in this private commercial organization. Private commercial organization में government कोई भी decision नहीं लेगी, कोई भी ऐसी planning यहाँ पे implement नहीं करवाएगी इनसे, right? हाँ, rules regulations that is there, but there will be no participation of the government. Next is private finance. Private finance means the capital of a private sector undertaking is arranged by its owners. जो फाइनेंसिंग है वो कहाँ से आएगी, वो खुद वही इंडिविजुअल करेगा जो उस बिजनेस को रन करना चाहता है, राइट. तो ये प्राइवेट फाइनेंसिंग होती है, इसमें कोई गवर्नमेंट या कहीं पब्लिक से इसको फंडिंग नहीं मिलती है, ओके. ये खुद अपने फाइनेंस को अरेंज करते हैं, राइट. Next is independent management. MGT means management. So independent management means a private sector undertaking is managed by its owners. In case of sole proprietorship and partnership, the owners directly manage the firm. Now here it is owned and controlled by the private person, single person, either single person or a group of people. So all the decisions are taken by them only. उनको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा डिसीजन लेने के लिए, वो सारे डिसीजन खुद लेंगे, ओके. सोल प्रोप्राइटरशिप जब कोई सिंगल पर्सन कोई बिजनेस को रन करता है, एंड पार्टनरशिप जहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 पीपल कम टुगेदर टू रन अ बिजनेस. जब इतने सारे कई लोग मिलके कोलैबोरेशन में दे रन द बिजनेस, दैट इज कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप. सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होता है, इसमें कोई और इसमें इंटरफेरेंस नहीं करता. अगर मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, सो आई हैव द राइट टू टेक ऑल द डिसीजन, राइट. सो दिस इज प्राइवेट, ओके. दिस इज पब्लिक, ओके. पब्लिक नाम से ही पता चला, पब्लिक मीन्स विच इज ओन and controlled by the public. And who is the representative of public? Government, right? So those organization which public commercial organization are the organization which are owned, okay, and operated by the government, which are owned, controlled and managed by the government. Those organizations are known as public commercial organization. Simple है, which is owned, managed and controlled by the government, that is known as public commercial organization, right. Now let's see the features. Now features are already there in the definition. Let's see how. State ownership. State ownership means which is owned, controlled and managed by the government. So state ownership means everything is managed by the गवर्नमेंट. सारी चीज़ें किसके द्वारा होंगी? गवर्नमेंट. सब कुछ कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट. दिस गवर्नमेंट आइदर कैन बी योर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट, एनीवन, राइट. सो दिस इज योर स्टेट ओनरशिप. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल. गवर्नमेंट कंट्रोल, सेम थिंग हियर. all the decisions, all the planning, everything is done by the गवर्नमेंट. सारी चीज़ें कौन करेगा यहाँ पे? गवर्नमेंट करेगा. उसमें आपके प्राइवेट में क्या हो रहा था? दैट इज ऑल द डिसीजंस, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग इज डन बाय द प्राइवेट पर्सन के द्वारा. बट हियर गवर्नमेंट, हियर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा. नेक्स्ट इज सर्विस मॉडल. नाउ प्राइवेट सेक्टर, that private or commercial organization, their main motive is to provide profit, right. But here government sector, profit plus service, okay, both, okay. So their main motive is to provide service. तुमने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं देखते हैं, ओके. दे प्रोवाइड यू सर्विसेज. उनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ओके. नेक्स्ट इज, जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. इफ यू गो एंड रेलवेज, ओके, रेल्स, और भी ऐसे बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं विच इज़ रन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट उसको रन करता है, तो वो प्रॉफिट तो देखता है, बट
plus service, it provides service also, right? Next is state financing. Now in private commercial organization, financing, funding and when they need the capitals, वो कहाँ से थे, वो खुद करते थे, प्राइवेट में खुद इंडिविजुअल करता था. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेट फाइनेंसिंग. ऑल द थिंग्स आर फाइनेंस और फंडेड बाय द गवर्नमेंट. सब कुछ फंड प्रोवाइड करना, फाइनेंसिंग करना, ऑल थिंग्स आर डन बाय द गवर्नमेंट. सब कुछ गवर्नमेंट करती है. नेक्स्ट इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मीन्स the management of public sector undertakings is bureaucratic in the sense that their operation are governed by certain rules and regulation prescribed by the government. Now bureaucratic management, here all the management is done by the bureaucrats. Bureaucrats means all the officers, administrative officers, those who are controlling and administrating the ऑर्गेनाइजेशन और द स्टेट, राइट. जैसे IAS, PCS, ओके. तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे दैट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट. बट उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाना है, कैसे होगा, ऑल इज डन बाय द ब्यूरोक्रेट्स. वो ब्यूरोक्रेट्स करेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज ब्यूरोक्रेट मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मीन्स private commercial organization, what is happening, how much they are earning, nobody bothered about that, right? किसी को कोई बहुत चिंता नहीं थी. But here governments, here public can easily ask questions that if we are paying tax this much, where the government is spending and all those things. So here public accountability is there. क्योंकि गवर्नमेंट का है ना, तो आपका राइट है, आप पूछ सकते हो. यहाँ पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनती है. I am reading that paragraph. The public sector undertakings are accountable to the public at large for their performance and results. The annual audit of these undertakings is conducted by Comptroller and Auditor General, जिसको CAG कहते हैं, of India. Okay, everything, सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, कहाँ हो रही है, जो हमें फंडिंग, जो हमें गवर्नमेंट को पैसे मिले हैं, जो पब्लिक they are paying the tax, everything, where all these things are managed and how they are being managed is all the information is given to the basic means which is required for the public. That information is given to the public. वो public आराम से जान सकती है, right? So this is the features of your public commercial organization. Clear? So public commercial organization which are owned, controlled and managed by the government, and state ownership, government control, service motive, state financing, bureaucratic management and public accountability. You need to write only 4 features in your book. If when you are making your notes, write only 4 features. Okay. Next is joint sector enterprises. Right? Joint sector enterprises. By its name itself, we come to the conclusion that joint means which are combined together, right? So basically joint sector business undertakings where the ownership and control and management is shared jointly. जहाँ पे controlling, managing, ownership is done jointly, एक साथ किया जाता है. That is your joint sector enterprises. In this, the participation of private as well as public both are there. Okay. दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट बोथ. ओके. नाउ दिस इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस वेयर द पार्टिसिपेशन, ऑल द थिंग्स आर ओन एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक एंड योर प्राइवेट एंटरप्राइजेस. नाउ व्हाट आर द फीचर्स? फीचर्स क्या है इसके? फर्स्ट इज मिक्स्ड ओनरशिप. मिक्स्ड ओनरशिप क्लियर है, व्हेन द प्राइवेट and the government both are owning and controlling, then obviously there is a mixed ownership. दोनों की ownership होगी वहाँ पे, right? Ownership यानी control. Okay. Next is combined management. Combined management means both are participating in management also. For example, planning, organizing. Okay. All the management activities, all the decisions, all the management related activities are carried by the private as well as government both. Okay, दोनों कर रही है मैनेजमेंट एक्टिविटीज, दोनों हैंडल कर रहे हैं. नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल मीन्स अ पार्ट. किसी कंपनी में किसी का कितना पार्ट है, राइट?
So the shares of the government, private business and the public in the capital as 26%, 25% and 49%. ये रेशियो है कि इस तरह से अगर किसी कंपनी में शेयर्स को यानी किसी कंपनी का कुछ पार्ट वो डिवाइडेड है 26, 25 एंड 40%, सो रिस्पेक्टिवली, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. इसमें तीनों इन्वॉल्व है, पब्लिक, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट. ओके. The aim is to pool the financial resources and technical know-how of the state and the private individuals. So all they are participating in these management also, decision making. So all these sectors are involved, basically private as well as public. So today this chapter is over. This is a very small chapter and very easy chapter. Classification of commercial organization. We have understood in this chapter that what is the meaning of commercial organization, then the categories of commercial organization, private, public and joint, then features of these commercial organization. Okay, now I hope that this chapter is clear to you, and in the next video we will start the new chapter. Thank you so much.